I haven't taken sound sleep yesterday. I have had no. I have had not. I have not had sound sleep yesterday. मैंने कल रात को अच्छी नींद नहीं ली है. Sarika, did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, sir, you gave us one interactive sentence, one interactive and one idiom yesterday. Uh, did anybody notice why do I ask a particular sentence every day? Because the grammatical rule is whenever you use past simple tense, so there should be a time, and in present perfect time is not required. This is the basic English difference between past simple and present perfect. If we do not see present perfect and past simple and present perfect according to Hindi, I'm not talking about Hindi, I'm talking about English to English. If you really want to use past simple, automatically the mentioning of time will clear that you are talking about past. I always say yesterday, means I am talking about a particular time, point of time. So, Sarika, give me a simple answer. Do not add anything. I repeat, did I give you any interactive sentence yesterday? Yes, sir, you gave us one interactive sentence yesterday. क्या मैंने आपको कल कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? जी सर, कल आपने हमें एक इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था. अब तुम विच लगा के किसी और से पूछो. Aparna di, which interactive sentence did I give you yesterday? Sarika, you gave us she was lost in her past. Interactive sentence. You have दी given that. दी कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था. Yes, Sarika, you कौन gave सा us कौन सा इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया interactive था? sentence. सारिका आपने मुझे she was lost in her past वाला इंटरेक्टिव सेंटेंस, वह अपने अतीत में खो गई. Which one in idiom did I give you No, yesterday? Aparna, ask to Hindi meaning. This interactive sentence. Ask नहीं, to Renu Renu. for Hindi meaning of this interactive sentence. Okay. Bhabhi, what is the Hindi meaning of that interactive sentence? The meaning of that interactive sentence is वह अपने अतीत में खो गई है. Okay. Ritu, which idiom did sir ने आई have? का यूज करें, आई का अभ्यास होगा इससे. Okay. Which idiom have I given you yesterday? नहीं. Which idiom did I give you? नहीं, give ही आएगा. Give आएगा ना. Which idiom did I give you yesterday?
बाप रे And सर, ये Renu, गिवन का बहुत चक्कर है मेरे तो। गेव आता ही नहीं, गिवन ही आता है। क्या करूं? करेक्ट करो। Renu, you have given me given us one idiom, that is my blue heart turned red. What is the meaning of that idiom? मेरी जान में जान आई. सारिका, इसका चैप्टर पूछना अपर्णा से। जी Aparna di, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to present simple. Be present. This sentence belongs to be present. Renu Bhabhi, what is the subject in this sentence? There is the subject in this sentence. अब ऐसा बोलने में थोड़ा सा अजीब लगा होगा सभी को, इसको हम पलट के बोल सकते हैं। The subject of this sentence is there. THERE there. क्लियर करने के लिए स्पेलिंग भी बोल रहे हैं। The subject of this sentence is there. THERE there. Ritu, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. Aparna, what is in this sentence? Is a main verb here. There is a main verb. नहीं क्या नहीं उल्टा करके कैसे? The main verb of this sentence is. What is no room here? Sarika? नहीं रेणु भाभी. No room is a noun here. What is the for here, Sarika? Bhavi, for is the preposition here. Ritu di, what is discussion here? Discussion is object here. Can anybody guess the meaning? सर अब और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। Absolutely right. There is no room for discussion. बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं। Sarika, you can start as it is or creativity as you wish. My son insisted me to play online game with his friend throughout the week. So I did not give him the permission to play throughout the week. I said कि you can play on the weekend, means Saturday, Sunday you can play with him, but you can't play throughout the week for 1 hour. So but he did not listen to me. So I said him कि there is no room for discussion. तो फिर मैंने उससे बोला कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, you have to play only on weekends. Should I complete the process? No, no. Okay. Aparna di. I was watching movie yesterday and I've seen one incidents on the movie that the one of husband wife was having a क्या Hot top. हाँ Hot top. हाँ
for talk, and after the talking, this and the wife said, "There is no room for discussion," and she went away. I told my husband that I will go to Satsangar every Sunday to attend the satsang, so there is no room for discussion. Ritu, My neighbor has come to me yesterday. He was asking me to do something. I told him there is no room for discussion. कल मेरा नेबर आया और उसने कुछ मुझसे पूछा. मैंने उसको बोल दिया बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है. ऋतु ये सेंटेंस कैसे बनाओगी? क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? sir, should I make? Ritu, you are mute. Is there any room for discussion? Wow, absolutely correct. It's a 6. छक्का मार दिया. इसका आंसर सारिका देगी, फिर सारिका पूछेगी, तो अगला व्यक्ति इसका जवाब दे. No, there is no room for discussion. क्या अब बातचीत की कोई गुंजाइश है? नहीं दी, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है. अच्छा सारिका, तुम इसका अफर्मेटिव आंसर देके. Okay. Yes, there is affirmative. अपर्णा, There is Yes, room for there is discussion. there is some room for discussion. रेनू, There is any room for discussion? नहीं, any तो question है. let रेनू speak. So yes, there is a room for discussion. Well, nice. ये ऐसा बनेगा. Yeah, there is a little room for discussion. थोड़ी गुंजाइश तो है. Some नहीं चलेगा. There is some room for discussion. नहीं, literally will do. और अच्छा लग लिटिल रहा है. भी नहीं है, ये अ लिटिल है. थोड़ा सा ग्रामर में जाके देखना, लिटिल और अ लिटिल में भी अंतर है. और we can say sir little bit ना, थोड़ी सी. हाँ, एक्चुअली हम लिटिल जब रूम को रूम की तरह देखते हैं ना सर, तो रूम में डिस्कशन करना तो फिर हम ऊपड़ांग बोलने लगते हैं, पर उसको कुछ गुंजाइश की तरह देखें तो फिर correct बनेगा. Do you remember, Ritu, make a room interactive sentence I gave at the beginning? Make a room. यस सर, यस यस. जगह दीजिए. जगह दीजिए. Okay, Sarika, please repeat your answer whichever you want, then ask to the next. Okay. Yes, there is a little room for discussion. बातचीत की थोड़ी गुंजाइश है. अपर्णा दी, is there any room for discussion? Yes, Sarika, there is little room for discussion. दी, क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? हाँ सारिका, कुछ गुंजाइश तो है. रेनू भाभी, is there any room for discussion? No, Aparna, there is no room for discussion. बातचीत की कुछ गुंजाइश है? नहीं रही. बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही. Ritu, is there any room for discussion? यस रेनू,
There is little room for discussion. क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? हाँ रेनू, बातचीत की थोड़ी गुंजाइश है. Sir, is there any room for discussion? Yeah, Ritu, there is a lot of room for discussion because this is human discussion and healthy discussion. सर, क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? बहुत गुंजाइश है क्योंकि ये मानव के बीच में होने वाला डिस्कशन है और स्वस्थ वार्तालाप है, वार्तालाप. तो देयर इज ए लॉट ऑफ रूम फॉर डिस्कशन. काफी गुंजाइश है. सारिका, केयर किल्ड द कैट is Aparna knows, I think. I heard, but you did not give. Should तो I? अपर्णा, पहला क्वेश्चन तो रितु से करो चैप्टर के बारे में. Okay. Ritu, what? Which chapter does this sentence belong? That chapter belongs to बेटा past. चैप्टर नहीं बोलना, चैप्टर तो प्रश्न करने वाला पूछ रहा कौन से अध्याय का है, तो तुम्हें केवल अध्याय का नाम बताना. That sentence belongs to past perfect tense. करेक्ट. आस्क द सेम क्वेश्चन टू रेनू. Renu, which chapter does that sentence belong? Ritu, this sentence belongs to be ne present past simple. करेक्ट. Okay. Sarika, what is the subject in this sentence? Come again, Bhabhi. What is the subject in this sentence? Bhabhi, care is the subject in this sentence. Aparna di, what is the helping verb here? There's no helping word here. What is skilled here? Ritu? Killed is second form of the verb here. Renu, what is the here? The is an article here. The cat. And Sarika, what is the here? Cat here. The is the article here. Di. Sorry, cat here. What is cat here? Cat is the object here. Okay. अब दोस्तों देखिए कितनी मजेदार बात है, अगर आपका ध्यान नहीं गया है तो. केयर इज ए वर्ब, you know very well, but care is working here as a subject. तो आज हम बहुत दिनों बाद बोलने जा रहे हैं. अंग्रेजी में एक ही शब्द नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एक ही शब्द कई रूपों में काम करता है. और आप ये भी जानते हैं कि केयर नाउन भी है. जब हम टेक केयर बोलते हैं तो वहां टेक वर्ब होती है और केयर नाउन होता है. और जब सीधे केयर बोलते हैं, शी इज वेरी केयरिंग, तो आईएनजी लग रहा है, मतलब वर्ब तो होगी. तो मजबूरी है अंग्रेजों की, हमारे लिए समस्या का कारण बनती है. कैन एनीबॉडी गेस द हिंदी मीनिंग केयर किल्ड द कैट? चिंता चिता के समान होते हैं. तुम्हें पता था, तुम्हें एकदम से गैसिंग नहीं करना था. चिंता चिता.
चिंता के समान, चिंता चिंता, चिता चिंता के समान। समथिंग रॉन्ग? नो नो सर, एक ही बात है। अगर वो वर्ड पहले लिखेंगे तो भी वो वैसा ही होगा, ये लिखेंगे तो भी सही होगा। चिंता चिता के समान होती है? नहीं नहीं सर, गलत हो गया। चिंता पहले चिता वाले के में बिंदी समान आएगी, पहले वाले में बिंदी आएगी। चिंता चिता के समान होती है, चिता थोड़ी चिंता के समान होगी। चिता तो गई, खत्म, बन गई वो तो। सर सबको पता होता है कि चिंता चिता के समान होती है, फिर भी चिंता तो करते ही हैं। मतलब कुछ भी होता है तो चिंता हो जाती है, ह्यूमन नेचर है, कैसे नहीं, ये बदले। सही है रितु। चिता चिता जो चिता है ना, नहीं नहीं, गलत है, 100% गलत है। चिंता चिता के समान होती है। अच्छा चिंता अच्छा, चिता के समान होती है। चिंता चिता के समान। चिता दोस्तों तो आज भाई वो तो कुछ किसी काम की नहीं ना। ऋतु, आज एक बिंदी हमने इधर से उधर कर दी तो हाय हाय करने लगे। तुम लोग रोज इतनी गलत हिंदी बोलते हो, माँ कसम की, सोचो हम खून का घूंट पी के रह जाते होंगे। एक बिंदी आज हमने इधर से उधर कर दी, हाय 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 हाय। लेकिन सर वो बात है, हम लोग भी गड़बड़ करते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। वही तो, अर्थ का अनर्थ एक बिंदी से हो जाता है। एक बिंदी तो हो जाता है। इसलिए हिंदी को अच्छे से बोलना। मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा, मातृभाषा नहीं। ओके सारिका। केयर किल्ड द कैट, वी नो, बट स्टिल वी आर डूइंग दिस। चिंता चिता के समान होती है, सब जानते हैं, हम जानते हैं, पर फिर भी हम करते हैं सेम थिंग। Don't worry, over caring and don't care, and care killed the cat. Don't worry, care killed the cat. चिंता मत करो, चिंता चिता के समान। भाभी। वन शुड नॉट केयर किल द कैट। किसी को भी चिंता चिता के समान नहीं करना चाहिए। नहीं, ओके। चिंता, केयर किल द कैट, चिंता चिता के समान होती है। आई नो दैट केयर किल द कैट, सो आई नेवर I never think a lot. सर यही फिर से नहीं बोल सकते? So I don't care kill the cat. ऐसा नहीं बोल सकते ना? ओके। मुझे हम वो बना देते हैं जो चलो हम मनोकामना पूरी कर देते हैं, मन में जो आया है। Nobody should care too much because care killed the cat. That's why I don't care. ओके सर। Care killed the cat, so we should not take stress about anything. Leave everything as it is. चिंता चिता के समान होती है, इसलिए हमको किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सब चीज एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। Now let me speak something about the question of Sarika. Actually, whatever I am going to say is well known by Aparna and in some part by Sarika. Actually, we are taught from the childhood, unwillingly, unknowingly, we start worrying because the structure of our families generally, middle class especially, they care a lot. And when we see our elders, mother and father, they care about everything. Like बच्चा दौड़ रहा है, अरे अरे गिर जाओगे,
the poor people generally do not care about it. So we have been watching this mentality and it has been rooted unwillingly. But I don't know how, but from the beginning, it is God gifted or what, I really don't know. But you have seen my lifestyle, Sarika, and Aparna knows well. I don't know how or from where I have got this thing. And uh, this it is the eyewitness that I am 53 and running 54. But I do not look like. If you see my friends, we are four friends get together every week in Sham Takis. I will send you their photographs. So I, I should not look like this in 53 or 54. I should look like, bald or something like but I don't know. I think I joined Priceline and I got the company of intellectual people. I was youngest person over there. I used to listen them. I did not used to poke my nose because a very high discussion used to go on. Then coincidentally, I joined Shri Ravi Shankar for different sessions of Ravi Shankar. And meanwhile, I added The Secret movie in my syllabus, you can say. You are online people. Otherwise, whenever any negative person, any person who makes so many mistakes and he's so much, guilty kind of person, he thinks that he cannot speak English. English is uh, very hard nut to crack and all. So I show, you can see here one TV is available. So I show the secret movie to them. It is available here in the pen drive. I will show you. So after watching this movie, The Secret, uh, Law of Attraction, another name of this movie is Law of Attraction. I will share you the link. You can watch and you will find he really unnecessary care kills the cat. In this pretense, I have used present simple tense. Unnecessary care kills the cat. So when we start speaking something, we are in flow. So automatically the particular sentences come on our tongue. There is no need to do any special effort. I want to tell you, Sarika, today whether you are not okay, you are not in the condition, whatever you think. But whenever we sit for a discussion and everybody is speaking English, you will find that everything is coming out automatically. Renu must listen this thing because she is sometimes worried that how will I speak very fluent English. So, as far as fluent English is concerned, there is no definition of fluent English, ladies. It depends on the flow of a person. If any person is very fast in Hindi speaking, he will be speaking English very fast. And if any person is very slow in Hindi speaking, he will be speaking English very slow. Like अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा कि हम जानते हैं, ये अच्छी बात नहीं है. तो means if he speaks English, he will speak English in the same manner because it's his nature. He will not speak like that. So, what is fluent English? हाँ,
if you think that if I want to speak anything and I will not lack the vocabulary, so it can come according to the person. That depends on your environment. Simple thing. Whenever after finishing the class, whenever I go upstairs, I generally speak a couple of sentences in English because from here I'm in the atmosphere of English here. I think it may be happening with you as well. After completing the class, you, you think means the words, the sentences come automatically. They come out. So as much as you remain in the atmosphere, suppose if you are in South, you will not use Hindi. Automatically, you will use English. So, and it will be communicating. There will be no problem. You will not find any problem there. Okay. Uh, Sir, I want to ask one thing. please. Sir, the you are talking about the film Secret. So, have I have the book like this one, The Secret, Yes, the same one you are talking about? yes, Okay. yes. Somebody has gifted us in Hindi. I want to have this in English. And very nice book. I have gone through 4 5 chapters of this. Not full. I'm very bad in reading, no, whether it is Hindi or English. So I have to complete this book. So I want to ask this. Okay. Thank you. I want to speak one Hindi sentence. It is said कि दृश्य माध्यम कर्ण माध्यम से ज्यादा सबल होता है. Video is rather effective than the reading or audio. So if you watch it, you will comprehend it rather easily, more effectively. Sir, is it available on the net? On the net? It is available. Okay, I You will can watch. find yourself, otherwise Yeah. I will find and send one link to you in your So we group. will definitely watch that. And no, I want to tell you one more thing. See, generally there are 4 batches in a day. So sometimes what happens, I regularly show that movie to the students and I keep sitting. Suppose generally what happens, teachers switch on the TV, movie is going on, and they go for tea or something like that. But I keep sitting over there. Sometimes I pause a particular picture and dialogue, and I say and I ask students because I want to involve them 100%. See, if I am out of the class, they will they will start the, because it is not that action movie or a comedy movie. It is a heavy topic. So they start doing something. So I want their 100% involvement. That's why I keep sitting and I take that remote control with me. And sometimes I pause it and I ask, better see, do you know what is this? Can you tell me? Can you tell me? So the full, it is 1.5 hour movie, but I show them only for 40 minutes. And then I say, I will send you the link. You can watch if you're interested. So the main things come between the 40 minutes. It is so powerful, really. After watching it, I think you will also start thinking negative. And you will not worry about the things. Sir, after watching, we will start thinking positive, I think. Why Negative. I said negative. Yeah. I think I said you will stop thinking negative. I wanted to say, slip of tongue. So you can, and I have applied all these things in my life.
Sir, See, the best thing is to apply it in our life. come Just again. watch. Sir, the best thing is to apply that in our life. Practical approaches should be there. That Hmm. should be there. You know, guys, Bhaiya told me this thing before the marriage, and after when I gave birth Chimu, so he was when he was little young. So I used to say all the time, means ये तुम ये करो नहीं करोगे तो नहीं होगा, मीन्स नेगेटिव, ये तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। मतलब तुम उसको छुओगे, कांच को नहीं छुओगे ना तो तुम्हें नहीं लगे, मतलब आई सेड लंबा सा सेंटेंस कि अगर मैं ये बोलूंगी कि तुम उसको छुओगे तो तुमको कट जाएगा, मीन्स यू आर सेइंग पॉजिटिव, तो होगा ही रहेगा। मतलब आप उसके बारे में ऐसे सोच रहे हो, छुओगे तो लग जाएगा, और लग जाएगा तो हम तो बोल रहे थे ना लग जाएगा, मतलब आप मन में सोच रहे थे कि लग जाएगा और खुश हो जाओगे कि हाँ तो ये मैंने तो बोला था। मतलब मैं आफ्टर लिसनिंग टू भैया दिस थिंग, आई यूज्ड टू से लाइक दिस। And this स्वीटली। is true. Our thoughts are like we manifest. I think what our future with our thoughts. तो जो हम सोचते हैं वही होता है. Whatever we think, that happens to us. So this is true, and I have done practical on this, and everything goes right if we think right. I always teach my daughter also. So Aparna is very positive all the time to her, and she is negative to herself. So I always tell her कि think positive for yourself. कुछ भी बिगड़ेगा नहीं ना. If you are thinking negative, negative things will surround you. So I am keep on teaching her, but uh, time only teach them. Should I give you sentence? The next sentence is दाग ढूंढते रह जाओगे. You know which chapter is going on. I'm not asking. Future perfect continuous. Okay, I'm telling you. Future perfect continuous. दाग ढूंढते रह जाओगे. This is one ad of rain or something. I don't remember. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. It's my go, na? No? आई थिंक Whose goal? जिम्नाजियम, हाँ रेणु भाभी सेड तो इट्स ऋतुज गो। जिम Gymnasium. Hmm. Yes. Sir, excuse me, I am leaving this because I have only 4% battery, so I will join from my mobile. I have to make that sentence. That sentence belongs to future perfect continuous tense. This is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is scar. Then I will take the helping verbs. The helping verbs are will have, Come again, I could not hear. will have been. Yes, thank you. दाग ढूंढते रह जाओगे. Scars will have been uh, searching. Then I will take the first form of the verb and I put the ing in it. So searching.
Scars will have been searching. Lastly, I will put exclamation sign. वो तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई शब्द कठिन है तो फिर आई हैव इन दैट केस. But here the sentence is not correct. Ritu, you mute yourself. Let me give this chance to Renu. सर इसमें दाग ढूंढते रह जाओगे. पर्सन इज मिसिंग हियर. सब्जेक्ट इज मिसिंग हियर. बट इंग्लिश में सब्जेक्ट आएगा सर पहले. पर क्या आएगा? दाग ढूंढते रह जाओगे. संबोधित कर रहे हैं किसी पर्सन को. सो that should be the subject. So should I give this? You want to? सर आई वांट टू क्विट क्योंकि हमारे हाथ में हमसे नहीं बनेगा. Aparna, let's see. I will also try. And firstly, I will take the subject, and the subject is you. Correct. You will be. You will have been. You will have been. And what should be the verb? Finding, searching, and Sarika, have which been. verb will you put here? Sir, I would like to put find verb here. And Renu? You will have been. ढूंढते. सर्चिंग ही होगा सर. सर्चिंग. And Ritu? Same as Renu, searching. Looking. Looking for. Looking for. Stain. Have been looking for. Stain. The stain. Scar. Generally, we use a scar for face or body. Body mark. Scars on the face. अब ये है सी गैस. सब्जेक्ट उसमें दिख ही नहीं रहा, लेकिन आप किससे बोल रहे हैं थोड़ा सा कल्पना करना पड़ेगा. हम सामने वाले से बोल रहे हैं, डाक ढूंढते रहे, तो वो है सब्जेक्ट यू. और सामने वाला हमेशा सेकंड पर्सन यानी यू ही होता है. सेकंड पर्सन में एक ही होता है यू. फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं. सेकंड पर्सन केवल यू होता है. थर्ड पर्सन में ही, शी, they, it, name, blah blah blah. Sarika. You will have been looking for the stain. दाग ढूंढते रह जाओगे. अपर्णा दी. You will have been looking for the stain. दाग ढूंढते रह जाओगे. रेणु भाभी. You will have been looking for the stains. नहीं होगा. Stain ही होगा. सिंगल है. हाँ, सिंगल है. Okay. You will have been looking for the stain. दाग ढूंढते रह जाओगे. ऋतु. You will have been looking for the stain. दाग ढूंढते रह जाओगे. Have you written? Yes, sir. Should I erase? Ladies, yesterday this one was left. It is very useful for competitive purpose and for teaching your kids. Does anybody know the plural number of gymnasium? Sir, gymnasium. Gymnasiums. नहीं.
Gymnasiums. अच्छा Gymnasium as it is, na? Gymnasia. 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 I have heard. And big deal. Gymnasia. Generally, people don't know about this. I think I have heard from you. Maybe Gymnasia. I when we visited Delhi, so I saw a picture indicating railway station gymnasia in Delhi. Let's see some more words like this, very common words. Medium. Media. Media. अब देखिए दोस्तों चीजें कैसे शब्द कैसे बनते हैं। मीडियम यानी माध्यम। अब अखबार जो है प्रिंट मीडिया कहलाता है, माध्यम है, छप के कोई चीज आप तक पहुंचती है। टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास चीजें पहुंचती है, मीडिया माध्यम। और Stadia. Stadium. Stadium. Stadia होगा ना उसका। स्टूडियो होगा ना। Stadium. Stadia. सरिका ये आइडिया फॉर से पढ़ना शुरू करो। आइडिया फॉर स्टेज। Sir, it is not completely visible. Professional? Auditoria. कहाँ पे से? Auditoria. Stage and auditoria. नहीं दिख रहा। और stadia. Auditoria, stadia. Now visible? हाँ सर, it is visible to me. पिन किया सारिका? Did you हाँ, pin? पिन करके जूम कर रही हूँ पर फिर भी नहीं आ रहा। प्रोफेशनल पीए द। अच्छा ये है प्रोफेशनल पीए। हाँ उसी के नीचे ही है। आइडिया फॉर। हाँ वो नहीं दिख रहा उसके नीचे। Auditoria. ऑडिटोरिया है, स्टेडिया। Stadia अच्छा और ऊपर। हाँ ये प्रोफेशनल स्टेज ऑफ ऑडिटोरिया। Stadia आ गया। हाँ स्टेडिया, ऑडिटोरिया स्टेडिया। ऑडिटोरियम होगा उसका ना। ऐसी चीज अब हमें इसको भेजने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीजें आपको आसपास दिखाई देगी आज के बाद। ये दोनों शब्द लिख लेना। यस सर। स्टेडिया ऑडिटोरियम। हाँ, और उसका सिंगुलर खुद लिख लेना। ऑडिटोरियम तो हम रोज बोलते हैं, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरिया हो जाएगा, यहाँ पे स्टेडिया हो जाएगा। और स्टेडिया प्लूरल नंबर कैसे होता मन में विचार आ रहा होगा। तो जिस देश में ओलंपिक का आयोजन होता है तो वहां पे एक ही एरिया में, बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे स्टेडियम का निर्माण सरकार करवाती है। हमारे यहाँ दिल्ली में हुआ था, अप्पू घर नाम था उसका। वहां पे उसको वो बनाया गया था, उसके लिए पर्टिकुलर शब्द हाथी को चिन्ह बनाया गया था। उसको बोलते हैं
तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेडियम आज भी बने हुए हैं, एक ही परिसर में बने हुए, और वहाँ पे बाहर से आए खिलाड़ियों के रहने का उसी परिसर में इंतजाम है। तो एक बहुत बड़े एरिया में ये सब डेवलप किया जाता है, तो फिर एक साथ जब बनते हैं, यहाँ ये मैच चल रहा है, यहाँ ये एक साथ स्टेडिया हो जाते हैं। So should we conclude the class? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice Thank you, weekend. See you on Monday. जी अब तुम लोग को काम होगा, नहीं तो सैटरडे को वो हो ही नहीं पाता अपना डिस्कशन जैसे। Sir, till Diwali we are busy, then we will do. After Diwali. After Yes. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye.